last lecture we started with the decimation and we ended up with the process of decimation in the time domain. Today we are going to analyze it in the frequency domain. Let me redraw the block diagram that we did last time, which was x of n passing through a Anti-Aliasing Filter decimated and wire and we will just do so spectral and जब क्या प्रोसेस था डेसिमेशन टाइम डोमेन में we have to throw away the samples. ठीक है ना, every m-1 sample हमने थ्रो किया था between the successive samples. और दूसरी तरीका मैंने ये बोला था कि you have to divide the whole axis by capital N and upon division only those samples will be contained जो कि whole numbers में result करते हैं. Wherever you are getting a fractional value, those samples were discarded. Now in the frequency domain, what will be the difference? That is x of e power j omega, which is equals to 1 by t summation a from minus infinity to infinity xc of j minus 2 over to the सकता omega by 2 minus 2 by k by t so s. मैंने वही इक्वेशन लिखी है जो कि हम सैंपल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी एक्स ऑफ एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास which has in fact gone through the sampling process and it has been converted into a discrete time signal. Now what is basically being done in decimation is that आपकी central frequency change हो जाती है, ठीक है, यानी fs is replaced by or it is changed by fs by capital E, ठीक है. हम ओमेगा के टर्म्स में अगर इसको लिखें then omega is in fact a by omega by इसी चीज को अगर मैं टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखूं यानी कैपिटल P के साथ रिलेट करूं तो जस्ट उल्टा काम होगा. अगर ओमेगा जो है वो डिवाइड हुआ है डेसिमेटेड फैक्टर m से तो उसके अगेंस्ट टाइम पे क्या फर्क पड़ा होगा कि टाइम विल बी इन फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस डेसिमेटेड फैक्टर t. Now plugging in this whole transformation of either omega or t in this equation, तो decimated signal का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसको मैं डिनोट कर रही हूँ x t of e power j omega. ठीक है, where this active d here is standing for decimated spectrum. यानी decimated signal का फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म x of m n का फूरियर ट्रांसफॉर्म. This is going to be t को मैं रिप्लेस कर रही हूँ mt से, तो 1 over mt summation a from minus infinity to infinity
J। अब चाहे आप ओमेगा को रिप्लेस कर दें ओमेगा बाई एम से या टी को रिप्लेस कर दें एम टी से, आपको सेम इफेक्ट नजर आएगा। ओमेगा बाई एम टी माइनस 2 पाई Q बाई एम टी। ठीक, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमेटेड स्पेक्ट्रम। इसमें आपको इफेक्ट नजर आ रहा है किसका, कैपिटल एम। नाउ एक्चुअली जिस तरह हमने लास्ट टाइम टाइम डिमेंड में किया था कि आपको सिग्नल अपना श्रिंक होता हुआ नजर आया था। श्रिंक इन द सेंस कि आपको नंबर ऑफ सैंपल्स कम नजर आ रहे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिसकंटिन्यूटी है इसके अंदर, तो आपको उस तरह से सिग्नल की प्रॉपर शेप कंप्रेस होती हुई नजर नहीं आती, रादर आपको अपने सैंपल्स का लॉस नजर आता है, नंबर ऑफ सैंपल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो सेम इज द केस है कि आपको वो इफेक्ट फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी नजर आए। Now, in frequency domain, since we are having a sort of continuous spectrum, यानी कि हमारे पास सिग्नल तो डिस्क्रीट टाइम होता है, ठीक है, और जब हम उसको ट्रांसफॉर्म लेने के बाद ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिटाइजेशन नहीं होती, वो आपको एक प्योर फाइन सा कर्व नजर आ रही होती है, जो भी इसकी फॉर्म, ठीक है, जिसको हम एक्स की पावर j में। हाँ, यहाँ पे आपको कंप्रेशन एक्सपेंशन का इफेक्ट बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अगर टाइम डोमेन में सिग्नल कॉम्प्रेस हुआ, सैंपल्स हमने थ्रो किए थे, रिडक्शन हुई थी, तो उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन, व्हिच इज बेसिकली एक्सपेंशन। दैट इज द रूल ऑफ थंब इज दैट if your signal is compressed in the time domain, then it will be expanded in the frequency domain. Okay, this is the whole effect of the decimation in frequency domain. आपके स्पेक्ट्रम्स एक्सपैंड करेंगे बाय अ फैक्टर ऑफ कैपिटल। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर हम रीड करें तो दो इफेक्ट्स नजर आएंगे आपको। पहला इफेक्ट क्या है कि देखिए, जिस तरह से पूरी डेसिमेशन सैम्पलिंग होने के बाद आपका सिग्नल स्केल हुआ था 1/t से, उसकी कॉपीज जनरेट हुई थी ओन एस पे और उसके मल्टीपल्स ऑफ ओन एस पे, फिर आपने पूरे एक्सेस को जब टी से डिवाइड किया तो बेसिकली वो क्या टी से मल्टीप्लाई करवाया तो वो पीरियोडिसिटी आपको नजर आने लगी थी 2 पाई पे और उसके मल्टीपल्स पे, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, एक्स की पावर j ओमेगा की प्रॉपर्टी। अब एक फर्दर इफेक्ट डेसिमेशन के बाद क्या नजर आएगा, अदर देन द प्रीवियस प्रोसेस जो हम यहाँ पर था, कि एम्पलीट्यूड फर्दर स्केल हो जाएगा 1/m से, पहली बात। दूसरा क्या था कि पीरियोडिसिटी देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रही है 2 पाई बाई टी टाइम्स की, और ये 2 पाई बाई टी आपका क्या था, ओम एस था। अब देखिए जब पीरियोडिसिटी आपको इस पे नजर आई है तो उसके अलावा यहाँ फैक्टर एडिशनल ऐड हो गया एम टी का। ये इफेक्ट किस चीज का लेकर आ रहा है, एक्सपेंशन। अब इस पॉइंट को बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रही हूँ। वन इफेक्ट इज ऑन द एम्पलीट्यूड अपॉन decimation in the frequency domain, Arsalan Ayub। जी मैम। जी बेटा, मार्क कर दिया। जी थैंक यू मैम। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन इन टाइम। अच्छा जी, पहला इफेक्ट किसका आया, एम्पलीट्यूड का, यानी वो फर्दर स्केल हो जाएगा 1/m से। सेकेंडली एक्सपेंशन हो जाएगी, किसने फैक्टर से, कैपिटल एम टाइम्स एक्सपैंड करेगा, लेकिन उसकी पीरियोडिसिटी जो है वो इफेक्टिव नहीं हुई, स्टिल इट इज रिपीटिंग इटसेल्फ एट 2 पाई एंड इट्स मल्टीपल्स। यानी डेसिमेशन में आपने दो प्रोसेसेस करने हैं, स्केल एम्पलीट्यूड by capital M, generate expanded copies of spectrum
यानी उसको आप एक्सपैंड करवाएं कितने फैक्टर से, कैपिटल एम से, एंड रिपीट देम, क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी तो खत्म नहीं हुई ना, वो तो भी सस्टेन कर रही है। रिपीट देम एट 2 पाई and its multiples. This point is very important, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि क्योंकि स्पेक्ट्रम एक्सपैंड हुआ है तो अब पीरियोडिसिटी भी इफेक्ट हो गई। नो, इट इज स्टिल एक्स ऑफ ई पावर जे ओमेगा, वो 2 पाई के अलावा किसी और फ्रीक्वेंसी में पीरियोडिक नहीं हो सकता, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ठीक, so it is going to expand by a factor of n, but it is again going to repeat itself at 2 pi and its multiples. हाँ, इफेक्ट क्या मैम नजर एक आएगा? क्वेश्चन था। एक मिनट, जो 2 पाई पे इसकी कॉपी जनरेट होंगी वो भी एक्सपेंडेड कॉपीज होंगी, उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करवाया होगा बाय अ फैक्टर ऑफ। जी बोलिए। मैम ये जो पॉइंट नंबर 1 लिखा आपने, स्केल एम्पलीट्यूड बाय एम, ये 1 बाय एम नहीं होगा? ओ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1 बाय एम। कह रहे ये चीज। अच्छा, now let's do an example of it and then we will move to back to the ब्लॉक डायग्राम, जहाँ पर अभी एक पॉइंट रहता है कि व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस एंटी अलियासिंग फिल्टर, ये है क्या चीज और इसका काम क्या है। फर्स्ट लेट मी explain the decimation process pictorially in the frequency domain। जैसे हमने लास्ट टाइम टाइम डोमेन में एग्जांपल्स किए थे कि हमने उसको बाय अ फैक्टर ऑफ n इक्वल टू 2 या 3 स्केल किया था, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया था कि आपने सैंपल्स थ्रो किए। अब हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका इफेक्ट क्या आता है, स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। इसको erase कर दीजिए, इसको ब्लॉक डायग्राम। Okay, for example, तो मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है, तो की पावर j होगा, which is center at 0 और this is say 5/2 minus 5/2, say this is 1। ठीक, अब ये देखिए, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है जो कि सैम्पलिंग प्रोसेस से गुजर कर आ चुका। ठीक है, तो फाइनली फॉर एग्जांपल हमें उसका एम्पलीट्यूड 1 ही मिला था या कुछ भी था, और डेफिनेटली ये स्पेक्ट्रम पीरियोडिक होगा। किस पे पीरियोडिक होगा? 2 पाई पे और उसके मल्टीपल्स पे। तो मैं इसका कंप्लीट स्पेक्ट्रम भी यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। This is going to repeat itself at 2 pi, then 4 pi, and similarly minus 2 pi, all having amplitude 1। अच्छा, अब इसका रूल ऑफ थंब आपको याद रखना, कभी गलती नहीं होती। आपने क्या करना है, सेंटर स्पेक्ट्रम पिक करना। क्या बोला मैंने? जस्ट पिक द सेंटर स्पेक्ट्रम, डोंट गो फॉर द कॉपीज। ठीक, सेंटर स्पेक्ट्रम आपका था 5/2 माइनस, जस्ट मल्टीप्लाई द सेंटर स्पेक्ट्रम की जो एजेस हैं या उसकी जो भी शेप थी, व्हाटएवर वाज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, just multiply it by capital
both sides will be multiplied by capital. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको डेसिमेट करवाते हैं बाय 2, क्योंकि डेसिमेटिंग फैक्टर कैपिटल M is 2. After multiplying these whole edges by 2, what I am going to get? Expand हो जाएगा ना, पहले माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 था, अब हो जाएगा माइनस पाई टू पाई, 2 टाइम्स उसका एरिया जो है इंक्रीज हो. ठीक, so this spectrum is now, the expanded version of the spectrum is now having a band from minus pi to pi. तो ये expand होकर आ गया यहाँ पे, यानी पाई और माइनस पाई. अब इतनी ही विड्थ की, यानी जितनी एक्सपेंशन हुई थी उतनी ही विड्थ की कॉपीज आप जनरेट करवाएंगे 2 पाई और उसके लिए, तो आपके पास आ जाएगा एक्स डी ऑफ ई पावर जी. ठीक है, अब देखिए जो मेरी कॉपी 2 पाई पे रिपीट होगी तो डेफिनेटली इसको ज्वाइन करेंगे. Agreed? Similarly, same is going to happen. Minus 2 pi, 2 pi, 4 pi. Periodicity इफेक्ट नहीं हुई, ये 2 पाई से 4 पाई नहीं बन गया, इसी तरह ये 4 पाई से 8 पाई नहीं बन गया. नो, हर स्पेक्ट्रम ने अपने अपने पोजीशन पर अपने आप को एक्सपैंड करा. यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक्सपेंशन का. ठीक है, आपके एक्स और ई का जिन्होंने की periodicity इफेक्ट नहीं हो सकती इससे. So this is x d of e power j omega, and amplitude is scaled by 1 by m. This is going to be 1 by 2, 1 by 2 and 1. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपकी विड्थ 2 टाइम्स एक्सपैंड हुई है तो आपका एम्पलीट्यूड भी 2 टाइम्स डिक्रीज हुआ. ऐसा ही है ना, which means the total energy that was introduced in the spectrum that is again the same. उस पर इफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर वो एक एक्सिस के ऊपर एक्सपैंड हुआ तो दूसरे एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा श्रिंक भी हुआ, यानी श्रिंक हम सेंस ले सकते कि वो उसमें रिडक्शन भी आ गई. So overall area of this triangle is going to remain the same. Now let's decimate it by n is equals to 3. इसी स्पेक्ट्रम को हम बाय फैक्टर ऑफ 3 डेसिमेट करें, क्या होगा? दोनों ट्रायंगल्स pi by 2 minus pi by 2, both edges are to be multiplied by 3. फर्दर आपको एक्सपेंशन नजर आएगी, मीटिंग एंड में तो प्लीज भी ज्वाइन कर लीजिएगा. यानी दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी 3 pi, फर्दर उससे ज़्यादा एक्सपैंड. दिस इज minus 3 pi by 2, दिस वन इज 3 pi. अब मुझे बताएं कि जो कॉपी 2 pi पे रिपीट हो रही है वो कैसी होगी? एनी आइडिया? Anti-Aliasing हो गया. Very good, because मैम 3 it पाई has पे होगी. expanded so much that the copy at 2 pi is definitely going to overlap the one at 0. Same is the case for 4 pi. So minus 2 pi, and this one is 2 pi, 4 pi. What about amplitude? This is 1 by 3, 1 by 3. So now you can very well see the decimation process has caused some problem here. ये जो spectrums overlap कर रहे हैं, it is causing aliasing
and most of all, loss of information, right? Now, here comes the job of the anti-aliasing filter. आप anti-aliasing filter क्यों use करते हैं? In order to avoid this aliasing which can happen by the process of expansion. जब स्पेक्ट्रम में एक्सपैंड करना है तो डेफिनेटली एम की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, आपके स्पेक्ट्रम की विड्थ पर भी डिपेंडेंट करती है, लेकिन there is a chance of aliasing once you are undergoing the process of expansion. So in order to avoid that aliasing, we first pass our signal through anti-aliasing filter. यानी हम यहाँ पे प्री फिल्टरिंग कर रहे हैं, right? We are passing it through an anti-aliasing filter, and after that, we are going to go for the process of decimation, that is basically the expansion in the frequency. So once we have passed it through the anti-aliasing filter, after the decimation process, there is no chance of aliasing, right? Now, how this anti-aliasing filter is going to work? Let's see it. Let me erase it. First, I'm going to write the specs of the anti-aliasing filter. Now, what are the specs that first of all, it is an ideal low pass filter. Secondly, its gain is 1, and third, its cutoff frequency is pi by capital N. ठीक, सिग्नल को कंक्रीट कर देगा पाई बाय कैपिटल एन पे, अगर वो इससे ज़्यादा या अगर इससे वैल्यू है, ठीक. सो हाउ टू ड्रॉ इट ग्राफिकली? इट इज एन आइडियल लो पास फिल्टर, यानी इट इज अ प्योर रेक्टेंगुलर पल्स, स्ट्रेट रेक्टेंगुलर पल्स होगी, सेंटर डेफिनेटली 0, गेन क्या है 1, ये एम्पलीट्यूड इसका 1 हो गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी ये रेक्टेंगुलर पल्स कहाँ से कहाँ तक है, दिस इज पाई बाय कैपिटल एन, दिस इज माइनस पाई बाय कैपिटल, ठीक. अब देखते हैं कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस स्पेक्ट्रम, क्योंकि प्रॉब्लम कब आई थी? जब हमने इसको डेसिमेट किया था बाय अ फैक्टर ऑफ 3, ठीक. लेट्स डू इट. अच्छा, तो हमने इसको डेसिमेट करवाया था इरेजिंग, सॉरी डेसिमेट करवाया था बाय फैक्टर ऑफ 3, तो इसमें इरेजिंग आई, ठीक है. लेट्स फर्स्ट पास इट थ्रू द फिल्टर अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डायग्राम. These are going to be rectangular pulses, and most important thing about this filter is that it is a digital, okay? This is a digital filter. क्या मतलब वो डिजिटल फिल्टर का? इट इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है. और इसको फिल्टर का नाम हम देंगे एच डी ऑफ ई पावर जे. डी से आपको याद होगा कि डेसिमेटिंग फिल्टर, इन डेसिमेशन प्रोसेस में जो फिल्टर यूज हुआ, ठीक है. एंड बीइंग अ फंक्शन ऑफ ई पावर जे ओमेगा, डेफिनेटली क्या होगा? पीरियोडिक. इससे पहले जो हमने फिल्टर किया था वो था आपका reconstruction filter, and that filter was basically a analog filter, so periodicity नहीं थी because it was a function of ohm. 2 pi, 4 pi, minus 2 pi, and so, ठीक है.
amplitude is 1 and cutoff frequency is pi by 3 minus pi. Okay. Now what will be the result of the multiplication of these two filters? यानी आपने जब स्पेक्ट्रम को इससे पास किया तो क्या रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम आएगा? Since this value is less than pi by 3, so आपका सिग्नल ट्रंकेट हो जाए और ट्रंकेटेड सिग्नल ही अपने आप को रिपीट कर रहा होगा 2 pi पे और उसके मल्टीपल्स. So this is going to be pi by 3 minus pi by 3, 2 pi, 4 pi and so on. ठीक. अच्छा, अब इसको डेसिमेट करवाते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 3. Now this spectrum is to be expanded by. ठीक, अब देखिए ये जब एक्सपैंड करेगा तो ये पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? पाई और माइनस पाई. ऐसे ही है ना? वेरी नेक्स्ट कॉपी, क्योंकि 2 पाई पे ही रिपीट करनी है और इतनी वर्ड्स के साथ रिपीट करनी है तो वो एग्जैक्टली ऐसा होगा. इससे अगला वाला ये होगा. सिमिलरली नेगेटिव साइड पे आपको ये नजर आएगा. अच्छा, अब देखिए ये पॉइंट्स जहाँ पे ये ब्लू वाला स्पेक्ट्रम डिप डाउन कर रहा है, ग्रीन वाला स्पेक्ट्रम राइज कर रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो आपको नजर आएगा दैट इज ओवरऑल इफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. Overall effect will be like this. ये जो स्ट्रेट लाइन्स है ये आपको नजर नहीं आएंगी. वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. क्लियर है ये चीज?